Fatma, whenever examiner will ask you to calculate LCM or HCF, you have two ways to solve them, okay? One way will be ladder method and other way is calculate their prime factorization, okay? And figure out their common part and then find the value. Directly use ladder method. And second one is find prime factors and then take common in them. And then by taking common, we can find LCM or HCF. Okay, Fatma, what is meant by that? Can you tell me the difference in these two? Do you understand the thing which I have written? Suppose that, let's take an example. It says that LCM means maximum. sorry, I'm going to take an example with the different colors so that you can get to know it well. I'm going to take an example and I'm choosing 225, suppose that, and 49. Now I will try this method one. This was my method one. This was method two. Okay. Now I'm having two options to solve that question. Okay. I will solve it over here on this side. Let's do it by method one first. Okay. Okay. Let's do it method two first because you have used this method multiple times in your previous classes. Okay. In your previous classes, you have used this method. So I will try to do this with this method first. Okay. So how can I calculate my prime factorization? I will use again the ladder method as well. Okay. But I will do them separately. Like 225, then it's not gonna divisible by 2 because at the end it is 5, so I will choose 5. So 5 fours are 20 and 2 is carried over here, so 5 fives are 25. Now 5 nines are 45, then 3 threes are 9 and 3 ones are 3. That is for 225. Now let's try for 49. Actually nothing is common in these two, so I'm going to try some other method. I will try 45 instead of that. I will put my value here, 45. I'm just taking a random example, okay? It's not a specific one, it's only the random example. Okay, I'm going to take 45. Now 5 nines are 45 and 3 ones are 3. Okay, that is my basic method with which I use to find my LCM or HCF. Okay, so I will write their value over here, then I will write the prime factorization 5 times 5 times 3 times 3. Then I'm going to write 45 and 3 times 3. So now if I want to calculate LCM, to calculate LCM all the common parts, okay, and let me do this with a different color. First I'm going to figure out all the common values. I will make a loop with that. Look, these three values were common. Okay, if we want to calculate LCM, then I will write these loop ones one time and the non-loop one same as it is. Okay, here only this quantity was non-loop. Okay, so in LCM I have to write all the quantities which are either in the form of loop or which are not in the form of loop. Okay, the quantities which are in the loop form, they will be written once. ऐसा ही है ना फातिमा, आपने यही अपनी प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ Yes, एलसीएम miss. फातिमा, ठीक है? तो जो लूप में होती है आप उनको वन टाइम लिखते हो, नॉन लूप वाली को आप एज इट इज लिख देते हो, ठीक है? तो ये आपका हो जाता है एलसीएम. सेम वे क्या था, यू विल allowed to write only the loop values. ठीक है, आपने only the loop values क्या है जो को कॉमन की फॉर्म में हमने उनको फिगर आउट किया है, आप सिर्फ उन वैल्यूज को लिखते हो. देन दीज आर HCF. ठीक है, इसको अल्टरनेटिवली आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो. देखो 5 एंड 5 ये दोनों, तो आप इसको 5 स्क्वायर भी बना सकते हो. सेम वे ये दोनों भी स्क्वायर में है, 2 टाइम्स है तो इसको भी आप स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो. यहाँ पे आप इसको 5 सिंगल है तो 5 को सिंगल टाइम लिखोगे, देन आप क्या करोगे 3 का स्क्वायर बना. आप में यहाँ तक कोई बात मुश्किल लग रही हो? एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? No, नो miss. प्रॉब्लम. ओके, अब मैं इसी चीज को, इसी क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ मेथड 1 आई विल लेट यू टू सॉल्व दिस. ठीक है, now what does method 1 says that? Method 1 says that डायरेक्टली यूज लैडर मेथड. हम इसको डायरेक्टली लैडर मेथड यूज करेंगे और हम उससे एलसीएम भी फाइंड करेंगे, देन एचसीएफ भी करेंगे. ठीक है, चलो अब देखते हैं हम. फर्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड एलसीएम बाय यूजिंग डायरेक्टली लैडर मेथड. जब भी आपने एलसीएम, सपोज दैट दिस वाज माय एलसीएम,
अभी यहाँ पे मैं एलसीएम के लिए ये कर रही हूँ, ठीक है। तो और यहाँ पे सपोज दैट मैं एचसीएफ के लिए, ठीक है, एचसीएफ के लिए। अच्छा आप देखो एलसीएम के लिए भी सेम आपने लेडर बना लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने दोनों क्वांटिटीज को एट अ टाइम रखना है, ठीक है। 225 देयर वाज वन क्वांटिटी 225 एंड अदर वाज 45, ठीक है। और सेम वे यहाँ पे भी आपने लेडर बना लेनी है, ठीक है। और इस पे भी क्वांटिटीज को सेम टाइप पे आपने रखना है, ठीक है, जितना भी ये लगे। सेम वे मैं यहाँ पे भी अपना जरा ये लेडर थोड़ी सी कंप्लीट कर रही हूँ ताकि मुझे बार बार ना ये बनाना पड़े। ओके अच्छा फातिमा, अब मैं ऐसा नंबर चूज करें जिसपे दोनों डिविजिबल हो सके। ओके सो आई थिंक एट द एंड इन दोनों के पास 5 5 है, सो आई विल ट्राई द नंबर 5। प्राइम फैक्टर जो 5 चूज करूंगी मैं, 5 4s are 20, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 5 5s are 25, देन 5 9s are 45, ठीक है। अब देखो ये दोनों मेरे ख्याल से 3 के टेबल में जा सकते हैं। 3 1s are 15, 3 5s are 15, देन 3 3s are 9, अगेन 3 5s are 15, 3 1s are 3, ठीक है। अब देखो अब मेरे पास सिंगल 5 रह गया, ये 1 बन गया। अब मैं इसको भी करूंगी 5 1s are 5, ठीक है। और अब यहाँ पे हम सेम चीज को हम एचसीएफ के लिए करते हैं, 225 45, ठीक है। अच्छा अब मैं देखूंगी ये दोनों सेम टेबल 5 के टेबल पे जा रहे थे, इट वाज 45, क्योंकि मेरे पास प्रीवियसली भी ये हुआ था, तो मैंने इसको ऐसे ही करूंगी 45 9, ठीक है। देन मैंने क्या करना है, मेरे पास अगेन मुझे पता है ये दोनों सेम टेबल पे जा रहे हैं, 3 1s are 3 5s are 15 एंड 3 3s are 9। थर्ड टाइम अगेन आई नो दैट कि दोनों अगेन 3 के टेबल पे जा सकते हैं, 3 5s are 15 एंड 3 1s are। अब मैं यहाँ पे रुक जाऊंगी बिकॉज यहाँ पे ऑड नंबर्स आ गए हैं, ठीक है। आपने वहां तक एचसीएफ में उस प्रोसेस को वहां तक प्रोसीड करना है जब तक दोनों डिफरेंट नंबर ना आ जाए, ठीक है। और एलसीएम में आपने तब तक प्रोसीड करना है जब तक दोनों 1 1 ना बन जाए। ठीक हो गया फातिमा? यस। ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल से भी ये दोनों मेथड ट्राई करवाऊंगी, ठीक है। अब देखो अगर बच्चे को थोड़ा सा ये लग रहा होता है कि काफी टीडियस मेथड है, देन दैट पर्सन कैन चूज दिस मेथड, ठीक है। एलसीएम आपने फाइंड करना है, ये क्विकली हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा, ठीक है। देन यू कैन राइट योर प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। ये आपके सारे प्राइम फैक्टर्स ये वाले आपने चूज कर लेने हैं, ठीक है। दैट को क्रॉस मैच भी करेंगे तो आप देखोगे कि दोनों सेम आंसर हो। एलसीएम आपकी टाइम्स 3, ठीक है। मैंने इनको कंबाइन करके लिख लिया ना, ये 5 ये भी था ये भी 5 था, सारे मल्टीप्लाई हो रहे थे, ठीक है। अच्छा एक और चीज, नेवर फॉरगेट टू राइट पुट क्रॉस इन देम, ओके, क्योंकि आपका क्रॉस मल्टीप्लाई लाजमी है। सॉरी एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। अच्छा फातिमा अब एचसीएफ में देखो, एचसीएफ हमारे पास क्या है, 5 हो जाएगा 5 टाइम्स 3 का स्क्वायर। तो अब देखो अगर हम अपने आंसर्स को मैच करते हैं तो हमारा आंसर मेरे ख्याल से देखो सेम है। ये आपका एलसीएम था, एचसीएफ है, और सेम आपका एचसीएफ यहाँ पे है। डिड यू फिगर आउट दैट कि आपका आंसर दोनों सेम है, ठीक यस है। मिस। तो इट्स योर चॉइस व्हिच मेथड इज सूटेबल फॉर यू। ओके लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। अच्छा अब देखो ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस दिस नंबर एज अ प्राइम फैक्टर्स। ठीक हो गया, प्राइम फैक्टर्स हमने बनाने तो इसका मतलब है हमें लैडर मेथड बनाना है, ठीक है। सबसे जब भी वो प्राइम फैक्टर कहेगा यू आर प्रेफर टू यूज लैडर मेथड, ठीक है। आपने क्विकली लैडर मेथड को चूज कर लेना है। ओके द नंबर इज 7056, ठीक है। अब देखो ये 6 है तो इसका मतलब है ये 2 पे जा सकता है, ठीक है। और अच्छा ये वाला पोर्शन जो होता है ना लैडर मेथड की इस साइड वाला, यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर्स आते हैं, ठीक है। लाइक ये वाला पोर्शन जो है इस पे सिर्फ प्राइम नंबर्स आएंगे, ठीक है। नो इवन नंबर इज पॉसिबल ओवर हियर, ठीक है। यू डोंट नीड टू पुट इवन नंबर ओवर देयर, दिस इज ओनली फॉर प्राइम फैक्टर्स। ओके मैं इसको 2 के साथ ट्राई करूंगी, 2 3s are 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 5s are 2 2s are 4 एंड 1 कैरी फॉरवर्ड 18 16 2 8s are 16। फातिमा मैंने ठीक किया है ना? आपको आई होप ये आता है क्योंकि ये बहुत फ्री क्लासेस में यस करवाया मिस। जाता है। ओके 2 1s are 2 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 15 बन जाएगा, एंड देन 15 से लोअर 2 7 are 14 होता है, यहाँ पे 14 आ जाएगा, देन 1 अगेन कैरी फॉरवर्ड 12 बन जाएगा, 2 6 are 12 एंड 2 4s are 8। ये भी सही है। उसके बाद है 2, अब ये 18 है, ठीक है, 1 लेस था ना तो मैं एक इसके साथ पेयर बनाऊंगी इसको। 17 है, 2 8s are 16, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 2 8s are 16 और ये 2 हो जाएगा, 2 2s are 2। अगेन मैं इसको 2 पे करूंगी, 2 4s are 2 4s are 2 1s are, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये फर्दर 3 पे जा सकता है, किस पे जा सकता है। अच्छा 441 जो है, अब फातिमा आपने देखना है कि ये मजीद किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, यस ये 3 पे जा रहा है। अच्छा हम इसको देखते हैं कि 3 1s are 3, ठीक है, 24 आ जाएगा, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 24 बन गया। अब देखो 3 4s are कितना होता है फातिमा? 3 12। अच्छा 1 सॉरी ये 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ ना, 14 बन गया, 14 तो 3 4 12 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 3 7 21, ठीक है।
अब देखो आगे हमने देखना है कि ये 7 के टेबल पे जा सकता, 3 पे नहीं जा सकता। 7 2s are 14 and 7 1s are 7। अच्छा ये 3 के टेबल में भी जा सकता है, ठीक है, 3 के टेबल में भी जा सकता है और 7 के टेबल में भी जा सकता है। हम इसको 3 से भी ट्राई करते हैं। 3 4s are 12, ठीक है, और ये 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 27, 3 9s are 27। बाद में ये बात समझ आ गई। अब ये 7 7s are 49, 7 1s are 7, ठीक है। सो इट सेज दैट एक्सप्रेस दिस एज इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स इसके हम लिख लेंगे 1 2 2 3 का स्क्वायर 7 स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर के फॉर्म में बन रहे हैं, 3 का स्क्वायर टाइम्स 7 का स्क्वायर, ठीक है। और इसके अलावा मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 रेज टू पावर 4 टाइम्स 3 रेज टू पावर 2 टाइम्स 7 रेज टू पावर, ठीक है। हाँ तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा अब इसमें क्या है, hence evaluate this value. Now I'm going to do second part. To do second part I'm going to choose this form. So look, I will write this as I'm going to directly write the value just here. It is 7056. So I'm going to write their prime factors. 3 square times 7 square. As you know that this square can be cancelled out with square root because the value of square root is 1 by 2. So they will be cancelled out with this one and we will be left with, and it will become as 2 times 2 4, 4 times 3 4 3s are 12, 12 7s are, it's 84. So 84 will be your answer. Padma, do you have any confusion in it? Do you want me to explain it No, again? miss. Okay, let's move to next question. Next question says that express this in the form of rational number. So our first attempt should be to resolve this compound form. Okay, I'm going to resolve it. It is 16 times 5 plus 1. 16 5s are 80. 80 plus 1 is going to be 81. Okay, let me just make my square root bigger because I need to write 81 over 16. Then I'm going to put my square root. Okay, now let's take the square root. You know that whenever we will be solving the indices as well, and you will, if you are having square root on both terms, then you can split your square root in the numerator and denominator as well. Okay, this can be done only for addition, only for division and multiplication. Okay, if you are having square root on two things which are being multiplied, just like in the above questions. In the above question, here the things were being multiplied. That's why I have split them up. Okay, if they were if there was no multiplication sign, then we were not supposed to cut them like that. Okay, we're supposed to solve them in other way. Is it clear, Fatma? You can split square root Yes, only miss. in terms of multiplication and division. You are not allowed to do this like splitting of square root in terms of plus and minus. Okay. Okay. Now this was 81. Sorry, this is 81. 81 over square root 16. So square root of 81 is 9 and square will be P is 9 and Q is 4. I hope you have cleared your concept. Okay, Fatma, now it says that write down an irrational number. Okay, square root 2 is an irrational number. It says that any irrational number. Okay, so you can write any irrational number. Okay, pi is very understood value. So you should try any other value except pi. Okay, so but there is not specifying. It didn't specify anything. Okay, it says that any irrational number. So square root 2, square root 3, square root 5. Okay, these are irrational numbers. Non-terminating, non-recurring decimals. Okay, those are called, you know that, non-terminating. If you don't know that, you can revise your lecture. And non-recurring decimals are called irrational numbers. And non-recurring decimals are called irrational. Clear, Fatma? Yes, miss. Okay, let's do this question. It says that a green bus runs every 10 and then this one is 20, 35. This says that after how many minutes they will be moving with the same time because they all of them are leaving by 9. Okay, so now they want us to calculate the time after how many minutes they will be moving with the same time again. Okay, so what are we going to do? We are going to take their LCM. Okay, by taking their LCM I will put them in the same LCM. It will be 10 20 35. So 5 is at the end, so I will use 5 as a prime factor to solve them. 5 2s are, 5 4s are, 5 7s are. Is it, Fatma? Yes, Now miss. let's do it. This is LCM. We have to take their LCM. Okay, we don't have to take their HCF. Okay, we want to calculate the lowest common multiple, like the time in which they will be moving again. Okay, so 2 1s are, 2s are, and then 7 will remain as it is. Again, 2 1s are, 7 will be remain as it is now.
Let's resolve 7, multiply these all. So my lowest time will be 5 times 2 times 2 times 7. It's going to be 5 to the 10, 10 to the 20, 20 times 7 is 140. So after 140 minutes, they are going to move again with the same time. Yes, Is it clear, miss. Fatma? Do you have any problem in it? No, miss. Okay. The question says that the prime factors are given. Okay, 108, write 108 as its prime factors. We are going to write them in their prime factors. All right. So same way we are going to choose ladder method. Ladder method says that 108. 2 fives are, 2 fours are, 2 twos are, 1 carried, 2 sevens are 14. 3 nines are 27, 3 threes are 9, and 3 ones are 3. Is it clear, Fatma? Yes, miss. So the prime factors are of 108 are 2 times 2 times 3 times 3 times 3 or raised to power cube, because 3 is present 3 times. So I will make this as a power. So here 2 raised to power 2 times 3 raised to power 3. Is it clear, Fatma? Now it says Yes, that miss. find the common multiple of these two. Okay, we have two options to solve it. I told you before, method 1 or method 2. Okay, as you can see that they have mentioned prime factors of 360. So and I have calculated the prime factors of 108. So I will try to choose a method 2. Okay, which says that I will take their common. Okay, so what will I be doing? I'm going to write 360. 360 was 2 raised to power 3 times 3 raised to power 2 times 5. And 108 is having prime multiples as 2 raised to power 3 times 3 raised to power 3. Okay, that's all. Okay, Fatma, the way to find LCM like this, what do you have to do? I told you before, you have to figure out their common parts. Okay, this was 2 raised to power 2. So whenever the power of these things are not same, you have to pick the power in the highest order. Okay, those values which are having higher power. Okay, here this one is having higher power because we are allowed to choose all the numbers which is not in common, because here you can see that these two quantities were common. Okay, but their power was different. So what will I be doing? I will be writing here the power which is having higher order. It is 2 raised to power 3. And here I will be writing the power of higher order, which is 3 raised to power 3 times this 5 will remain as it is. Because in LCM, we write all the values which are either in the form of loop or not in the form of. Is it clear, Fatma? Fatma, ये मुश्किल लग रहा है Yes, तो मैं miss. अल्टरनेटिव मेथड ट्राई करूं? फातिमा? Okay, miss. No, miss. ओके, चलो अब ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया. देन इट सेज दैट that is our answer. ठीक है, so I'm going to write it as express, give your answer as the product of its prime factors. Okay, so I'm gonna leave it like that because it says that leave it as in the form of a prime factor. 2 raised to power cube 3 raised to power cube times 5, that is my prime factor for the common LCM of these two. Now it says that find the smallest positive integer k as such that 360k is a cube number. Okay, Fatma, what is meant by a cube number, Fatma? Cube number, it will be represented in the form of power of 3, just like 8. 8 is a cube number because I can write 8 in the power of 3. Okay, but, in the power 2 raised to power 3. Its order is 3. Is it clear, Fatma? So 8 is Yes, my miss. cube number. Same way 16. 16 is my cube number because 4 cube is 16. Same way 27 is a cube number. 27 the cube number बन रहा है ना? 3 times Yes, 3 miss. is 9. Then 3 is 27. Okay. So 3 is a cube, 27 is a cube number as well. ठीक है. अब देखो, अब अगर उसने ये कहा है मुझे कि 360 के साथ किस चीज को मैं मल्टीप्लाई करूं कि मेरा क्यूब नंबर बन जाए. अब देखो फातिमा, उसने मुझे 360 के साथ उसने कहा वी आर गोइंग टू ऐड अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ के which can make 360 a cube number. ठीक है, अब मैं इसके प्राइम फैक्टर्स को देखती हूँ. I know that 360 is having prime factors as 2 raised to power cube times 3 raised to power square times 5. So Fatma, if a number is going to be a prime factor, then all of its elements should be having order of 3. It means that I need to add one more 3 so that it can make a power of 2 raised to power 1 3. And I need to add 5 raised to power 2 over here so that when base will be same, power will add up. ऐसा ही है ना फातिमा? फातिमा, ये बात समझ आई है? Yes, miss. Let me try this with another way. Yes, miss. एक मिनट, मैं एक और वे से बताती हूँ. अच्छा देखो,
आपने अब इनको 3 बनाना है। हाउ कैन आई मेक देम इन द पावर ऑफ 3? अब देखो ये तो मेरे पास 2 रेज़ टू पावर 3 है, ठीक है। आपको पता है जब बेस सेम हो देन पावर कैन बी एडेड अप। इट मींस दैट आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 1 विद इट, ओके, देन अगेन विद दिस। If I want to make its power 2 then I need to multiply this with the power of 2 as well, ठीक है। अभी देखो, अभी मेरे पास जो मैंने जो काम किया है, मैंने इसको खुद से ऐड किया है और इसको खुद से ऐड किया है, तो दैट जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, बेस सेम है, पावर ऐड अप हो जाएगी, ठीक है। ये और किसी के साथ पावर ऐड अप नहीं करेगा, सिर्फ सेम बेस के साथ पावर को ऐड अप करेगा, ठीक है। तो अब देखो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 3 टाइम्स बेस इज सेम सो पावर इज गोइंग टू ऐड अप। हम ये इंडिसेस वाले चैप्टर में बहुत डिटेल से करेंगे, ठीक है। 1 + 2 ये हो जाएगा। अब देखो ये बन गया मेरे पास 2 रेज़ टू पावर 3 टाइम्स 3 रेज़ टू पावर 3 टाइम्स 5 रेज़ टू पावर 3। अब ये मेरे पास एक क्यूब नंबर बन गया है, ठीक है। नाउ यू कैन से दैट दिस इज अ क्यूब नंबर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा और 5 रेज़ टू पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई, देन मैं इसको क्यूब नंबर बना सकती हूँ, ठीक है। तो यही चीज वो कह रहा है कि अगर हमारे पास 360 है, मैं इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि मैं इसको क्यूब नंबर बना दूं। तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 रेज़ टू पावर 1 टाइम्स 5 स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको जब स्प्लिट करके लिखती हूँ इस पोर्शन को ही, तो ये देखो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 3 टाइम्स 25, 5 5 25 होता है, तो 25 को 3 से करोगे 75, 75। यहाँ पे मैं के की वैल्यू क्या लिखूंगी, 75। फातिमा मुझे बताओ ये बात आपको समझ आई है? Yes, miss. मुश्किल तो नहीं लग रहा है ये फातिमा? No, miss. ओके, आगे इसकी वजह से बहुत प्रैक्टिस आपकी होगी, डोंट वरी, ठीक है। आगे No, हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं miss. जिससे आप इंशाल्लाह इसको अच्छे से कवर कर लो। ओके फातिमा, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18, ओके। और 18 के फैक्टर्स लिखना आई थिंक तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। आप क्या करोगी, सिंपली प्राइम फैक्टर्स, ये क्या बन जाएगा, 2 9s आर, ऐसा ही है ना। फैक्टर्स क्या होते हैं, जो इस टेबल पर डिवाइड हो सकता है, जैसे 1 को हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं, 3 पे जा सकता है, 3 6 पे जा सकता है। 4 के टेबल में नहीं आता, ये 4 पे डिवाइड नहीं होता। फिर 6 पे जा सकता है, 9 पे डिवाइड हो सकता है, देन 18 पे, जहां तक ये होता है लास्ट वही नंबर हम ऐसा ही करते हैं ना हम। Yes, miss. ठीक है। अच्छा, अब उसमें देखो आप इस फॉर्म में भी कर सकती हो, ठीक है। अब इस फॉर्म में भी कर सकती हो, लेकिन हमने इसके फैक्टर्स बहुत सारे, ये सिर्फ प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ नॉन प्राइम फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि 6 हो गया, 9 हो गया, 18 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर करते हो तो आपके सिर्फ प्राइम फैक्टर्स आएंगे। तो हमें नॉन प्राइम फैक्टर्स भी लिखने हैं, तो इसलिए आप इसको सेपरेटली देख लो। ओके फातिमा, अब यहाँ पे उसने कहा प्राइम फैक्टर्स, तो हमारे पास लैडर मेथड के अलावा कोई मेथड नहीं है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू चूज लैडर मेथड टू राइट इट्स प्राइम फैक्टर्स। दिस इज 392, let's divide it, 2 1s are 19, 2 8s are 60, 2 9s are 18, क्योंकि हमें 19 से छोटा नंबर लिखना है ना, और स्मॉलर नंबर जो है 19 से वो आपके पास 18 होता है, ठीक है। तो 2 9s are 18, then 1 carry forward, 2 6 are 12, ठीक है। then 2 9s are 18, 1 carry forward, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 1 carry forward, 2 9s are 18। ऐसा ही है फातिमा। अब मैं इसको Yes, करती हूँ, miss. 7 7s are 49, 7 1s are 7, ठीक हो गया। अब इसके प्राइम फैक्टर्स मेरे पास क्या बन रहे हैं, 7 टाइम्स 7, ऐसा ही है ना। अब मैं इसको 2 रेज़ टू पावर क्यूब बना दूंगी एंड 7 स्क्वायर, दैट इज माय प्राइम फैक्टर। इज देयर No, एनी miss. प्रॉब्लम फातिमा? अब जो उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना, हम इसी के थ्रू काम करेंगे। अब देखो उसने ये हमें दिया हुआ और उसने कहा ये इसका स्क्वायर रूट लें। अब मुझे पता है, देखो स्क्वायर रूट मैंने लेना है, मैं इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे लिख रही हूँ 2 रेज़ टू पावर 4 टाइम्स 7 रेज़ टू पावर 2। हमें पता है, अभी हम जब इंडिसेस का चैप्टर भी करेंगे उसमें भी यू विल गेट टू नो दैट किसी भी चीज की पार्ट का ऊपर अगर स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू जो होती है ये होती है 1/2। अगर आप स्क्वायर रूट को खत्म करते हो तो उसकी जगह पे आप उसकी पावर बना के लिख दोगे 1/2, ठीक है। सेम वे मैंने आपको बताया था, वी कैन स्प्लिट स्क्वायर रूट इन द फॉर्म ऑफ ओनली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, इसमें मैं स्क्वायर रूट स्प्लिट हो जाएगा, ये 7 स्क्वायर था, तो देखो ये तो इसके साथ सिंपली कट आउट हो जाएगा। अब मैंने आपको ये बताया है स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2, ठीक है। जब पावर 1/2 है तो ये बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 एंड 1/2 टाइम्स 7। अब ये 2 1s are 2 2s are, ठीक है। देन योर 2 रेज़ टू पावर 2 होता है 4, 4 टाइम्स 7, 7 4s are 28, सो 28 इज द आंसर। अच्छा आप देखो, जब बच्चे की हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो फिर उसको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। वो डायरेक्टली डायरेक्टली ये स्टेप कर सकते हैं। आपको मेरी बात समझ आई है? जब Yes, आपकी miss. हैंड्स ऑन, आपके पास 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा स्टेप्स तो इन्वॉल्व है ही नहीं है, ठीक है। तो बस जब आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप इसको इजीली सॉल्व कर लो। ओके फातिमा, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है,
It says that okay, उसने ये आपको नंबर दे दिया, इसने कहा express 140 as a product of its prime factors. Let's take the prime factors. 140, 2 sevens are 0 as it is, 2 threes are 6, 1 carry forward, 2 fives are, now 5 sevens are 35 and 7 ones are 7. So its prime factors are 7. And you can write this as 2 raised to power 2 times 5 times 7. Highest common factors, okay. So as the prime factors are already given, so I can simply take the common from these two. 168 is equal to 2 raised to power 3. Fatma, look, here it is 2 raised to power 2. So it means that I need to split this value so that I can take a common from them. I will split this in 2 raised to power 2 dot or times. Dot means multiplication. Times 3 times 7 and then for 140 it's going to be, already we have made this, which is 2 raised to power 2 times 5 times 7. These two, same way this is common. He was talking about HCF, so HCF में हम सिर्फ common quantities को consider करते हैं, ठीक है? So HCF is going to be 2 raised to power 2 times 4 times 7 is going to be 28. So 28 is the answer. Is it clear, Fatma? Now, Fatma, Yes, our next miss. question is find the smallest positive integer n and find the square number. अब Fatma देखो, अब इसमें भी square number की बात वो कर रहे हैं, ठीक है? Same process. Square number क्या होता है? Just like 4. 4 is a square number. 16 is a square number. 9 is a square number. कैसे है square number? 2 raised to power 2 4. 4 raised to power 2 square number है, ठीक है? अब मैंने अगर इसका square number find करने हैं इस चीज के, तो मैं देखूंगी कि मेरे पास क्या square number बन सकता है ये. अगर नहीं, अगर मुझे इसको बनाना है, ठीक है, उसने कहा आपने इसको square number बनाना और फिगर आउट करना है n क्या होगा, ये स्क्वायर नंबर बन जाए. अब यहाँ पे देखो इसके मैं प्राइम फैक्टर्स लिखने लगी हूँ. अच्छा, अब इसके प्राइम फैक्टर्स है 2 raised to power 3 टाइम्स 3 टाइम्स 7. अब फातिमा देखो, मुझे इसको स्क्वायर नंबर बनाने के लिए मुझे 2 का मल्टीपल चाहिए है ना. अब ये 3 है, इसका मतलब है मुझे इसको 4 बनाना होगा, ठीक है. इसको मैं 4 बनाने के लिए इसमें +1 ऐड करूंगी. इसका ये 1 है तो मैं इसमें 1 और ऐड करूंगी ताकि 2 बन जाए. ये ऑलरेडी 1 है तो इसमें भी मैं 1 और ऐड करूंगी ताकि ये 2 बन जाए. ऐसे ही फातिमा.